Assalamualaikum viewers and listeners, welcome back to All Understand. After a while, I am back with these wonderful fellas जो रेगुलर रहे हमारे साथ पिछले 4 महीने से and specifically PSL जब चले तो we had a wonderful time together. Uh, PSL done, kakul training camp done as well, Eid celebrations done as well. Now it is all action और एक्शन शुरू होने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ पता नहीं साल में कोई हम 474वीं दफा खेलने लगे हैं एक और सीरीज भी हमने अरेंज कर ली हुई है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अप्रैल आई एम लूजिंग द काउंट कि कितनी सीरीज होनी है कितनी नहीं होनी सो एजेंडा हमारा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे बट इन नेक्स्ट सेगमेंट आई gonna let you know कि हम किस टीम पे चलेंगे बट लेट मी फॉर्मली वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल जैद क्या हाल चाल है होप यू आर doing good and you had a smashing Eid. अल्हम्दुलिल्लाह अमन भाई मैं ठीक आप सुनाएं थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन Alhamdulillah, doing good. Thank you so much for joining. And of course, pinch hitter से ही हमें ज्वाइन करें तला आंगरे का मौसम कैसा है यार कभी ये पूछा ही नहीं Hi everyone. और काफी गर्मी थी but today it's raining so it's really great. अरे वाह यार वाह आज दुबई में भी अन्य वाह बारिश हो रही है और स्टेटस रील्स आई मीन दुबई दुबई हुई पड़ी है एंड लास्टली कराची चलते हैं जहाँ पे बारिश आए तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है सो कराची से ज्वाइन करें इमाद इमाद थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्या हाल चाल Yeah, I'm fine, Emmett. Thanks for having me, and I really love the concept that you brought this up यहाँ पे, and I think people are gonna enjoy it. Yeah, surely. So, Imad, आपने touch on कर ही दिया. Now I gonna let the audience know how it gonna work. So basically, वैसे देखा जाए तो सीरीज के तीन पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं जब भी मैच खेलने लगो तो it is either win, it is either lose or you can draw a match. I know T20I में super over आ चुके हैं and what not, but still a match can be realistically drawn. So three possible scenarios. हम बिगर पिक्चर इस वे में फेंकेंगे कि बाबर ये पॉइंट हुआ है तो व्हाट कैन बी द हॉरर result for him, for his side, and potentially ramifications on World Cup. Imad would be taking the center lead for horror side of things. Imad would be the painter for that concept. Zaz would be doing the realistic stuff, जो on ground चीजें लग रही हैं, जो दोनों squads हैं, बाबर का appointment होना. तो what does the ground condition say? एंड तला तला आजकल बाबर आजम की बैंड वैगन पे चल रहे हैं आर्टिकल्स लिख रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ही गाना पेंट अस द आइडियल पिक्चर के पाकिस्तान कैसे व्हाइट वॉश करेगा वर्ल्ड कप के लिए ड्रीम सिनेरियो बन जाएगा कौन से प्लेयर फॉर्म में वापस आ जाएंगे एंड व्हाट नॉट आई एम जस्ट थ्रोइंग फ्यू क्लूज माई सेल्फ आई एम स्टिल अनअवेयर कि किसने क्या क्या आइडियाज प्रिपेयर किए आई जस्ट थ्रू देम फ्यू क्लूज कि यार इस रेंज में आप लोग जा सकते हो बट दे आर गोना थ्रो द पिच okay, I gonna start with Tala first of all. Tala, हमें cloud line पे लेके जाना है. That is your challenge. So, and of course, very lastly, viewers, there is a live poll in the chat as well, which reads as Babar ये appointed as captain के बाबर को दोबारा कप्तान मुकर्रर किया गया. Right decision. Simple answer है आपसे. Absolutely yes or no. So get involved in the voting. And now the lead would be up to Tala. Tala cloud 9 पे लेके जाना है कैसे white wash करने लगे what would be the matchups even what would be the players to watch out for so over to you सबसे पहले तो इंशाल्लाह बाबर will do what Imran Khan did, leaving captaincy, then coming back, then winning the next World Cup. here we go wow इस सीरीज को देखें तो आई थिंक आइडियल केस में द रिजल्ट डजंट रियली मैटर क्योंकि आई थिंक 12 मैचेस हैं अभी 12 या 10 मैचेस हैं बिफोर द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान तो yeah इस सीरीज में डजंट रियली मैटर अगर आप 5-0 जीतते हैं या 5-0 हारते हैं और आइडियल सिनेरियो में
I guess if you start with the top order, Yeah, sure. नई opening pair will be Babar and Saim, and Okay. you know दोनों ने पावर प्ले में काफ़ी अग्रेसिवली खेला था, तो यू कैन गिव देम ऑल 5 मैचेस क्योंकि देयर इज नो रियली अदर ऑप्शंस. और नंबर 3 पे उस्मान खान भी स्क्वाड में है, फ़खर जमान भी हैं, रिजवान भी हैं, सो दोज आर योर ऑप्शंस फॉर नंबर 3. और इस सीरीज़ को इस्तेमाल करके तीनों को चांसेस दिए जा सकते हैं, एंड यू कैन सी विच एवर बैटर वर्क्स द बेस्ट फॉर दैट पोजिशन. और 4-5 पे आई गेस द ऑब्वियस चॉइस इज शादाब एंड आजम. Mm-hmm. और अगर Okay. हाई रिस्क रोल बैटिंग में वही होता है जो मतलब 5 और 6 पे 7 पे आगे इन्होंने हिटिंग करनी होती है, सो आई वुड कीप दोज प्लेयर्स इन द लाइनअप फॉर ऑल मैचेस. उनको पूरा चांस दिया जाए कि दे कैन Oh, यू नो wow. Mm-hmm. दे कैन गेट द राइट कॉन्फिडेंस एंड राइट फॉर्म गोइंग फॉरवर्ड. Yeah. जो एंड पे जिसने आके हिटिंग करनी है उसको आप ड्रॉप करके चेंज करते जाएं, एंड यू नो आई डोंट नो ट्राई इरफान नियाजी और समवन. तो आई डोंट थिंक दैट रियली वर्क्स वेल, क्योंकि उस टाइप के प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए कि वो हर मैच खेले बेस्ड ऑन एबिलिटी. और बॉलिंग की तरफ आए तो आई थिंक मेन पेसर्स को रेस्ट किया जाएगा आइडियल सिनेरियो में. दे विल Okay. लास्ट मैच और फोर्थ मैच आई गेस शहीन और नसीम. और अबरार और उसामा मीर स्पिन ऑप्शन है, उन दोनों को ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट मैचेस में, डिफरेंट कंडीशंस में. कुछ पिंडी में मैच भी है, कुछ कराची में, आई थिंक. सो यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट प्लेयर्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. और थर्ड पेसर रोल, हाँ लाहौर में भी है आई थिंक. सो थर्ड पेसर रोल के लिए आमिर वापस आया है, सो यू नो जस्ट गिव हिम द न्यू बॉल एंड in the absence of Shaheen and Naseem, and let him, you know, work his way back into internationals. Or I think at the end of this, best case scenario lineup, I think यही होगी. Babar and Saim opening, Usman at 3, फिर शादाब और आजम 4 and 5, फिर इफ्तिखार और इमाद 6-7, and then Shaheen, Naseem, अबरार as your third spinner. और आखिरी पेसर में आइडियली यू वांट हारिस रऊफ कमिंग बैक. इस सीरीज में ही वाजंट पिक्ड, अभी भी इंजर्ड है, सो इधर आमिर और हारिस रऊफ. All right. So Tala, are you done? And Oh, okay. Start Shalita. Anyway, viewers, I would rate them individually at the end. But let's see how it goes. I would give each of them a rating out of 10. And of course, you can that your thoughts know कि किसने अच्छी पिक्चर इंडिविजुअली पेश की. मूविंग फॉरवर्ड ज़्यादा वैसे पोल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, बट आई विल लेट हिम टू डू सो. देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर टू द पोल क्वेश्चन. एंड या इट इज जस्ट काइंड ऑफ रिमाइंडर के लाइव चैट में पोल चल रहा है. ओके जैद, आपकी तरफ आते हैं. You have to be realistic, not pessimistic, not idealistic. You have to be realistic. PSL में कुछ प्लेयर्स की फॉर्म नहीं लगी, लाइक्स ऑफ जमान खान, लाइक्स ऑफ फखर जमान, वो फ्रिंज प्लेयर्स बन गए हैं. कुछ प्लेयर्स को फॉर्म चाहिए, वो कौन से प्लेयर्स होने लगे हैं. और टीम मैनेजमेंट और पीसीबी का सेटअप देखते हुए केओस भी होगा. सो व्हाट आर द लाइक in between situation between the horror case and the idealistic case? Over to you. यार सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं, ना ही थोड़ा बहुत मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरा जो है वो थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ज़्यादा है ज़रा रियलिस्टिक से. लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगी. लेकिन न्यूजीलैंड के एक मैं देख रहा था, मैं थोड़ी देर पहले स्क्वाड देखा था, एक वो कोई अनकैप्ड फास्ट बॉलर है विलियम समथिंग, और एक उनका लेफ्ट आर्म पेसर है जिसकी लंबी सी, आई थिंक उस वही है जिसकी लंबी सी हाइट है, बेन लिस्टर. मुझे लगता है इन दोनों ने बहुत विकेटें लेनी है हमेशा की तरह. वो जो नए बॉलर को पाकिस्तान को एक बीमारी है विकेटें देने का,
वो इसका भी सीरीज में होगी। और उसके अलावा पाकिस्तान के लिहाज, बल्कि न्यूजीलैंड के लिहाज से आई थिंक बैटिंग उनकी शायद इतनी अच्छी ना करे। हाँ, सब टॉप हम्म, ऑर्डर, लेकिन नीचे चैपमैन और ये चैपमैन टाइप निशान। के जो है ना, ये बैटिंग को जरा थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हैं, लाइक डिसेंट टोटल्स कर सकते हैं। पाकिस्तान हम्म, के हिसाब से आई थिंक के 11 जो ये खिलाएंगे ऑप्टिमिस्टिकली और रियलिस्टिकली सोचे अगर, तो वो हम्म, होगी साइम और बाबर ओपन करेंगे। और तीन ओके, पे आई इंटरेस्टिंग। थिंक हम्म, हम्म, ये तीन चार जरा मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अभी भी शादाब को 4 पे खिलाने के लिए का सोचेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है हम्म। इनसे नहीं होता है, इनके दिमाग में ये मसला है कोई। ओके। बट आई थिंक 3 पे ये खिलाएंगे उस्मान खान को, 4 पे हम्म, फखर जमान, या ये होगा कि 3 पे उस्मान खान, 4 पे फखर जमान, या ये करेंगे 3 पे रिजवान और 4 पे उस्मान खान। ओके, फोकस वन क्योंकि आपके लाना पे मैंने लाइक रियलिस्टिक। ओके, ओके, कीप फखर गोइंग, जमान कीप गोइंग। रिजवान ये होगा, क्योंकि हम्म, फखर जमान की थी कि लास्ट न्यूजीलैंड वाली सीरीज में बड़ी अच्छी फॉर्म थी, लेकिन ये भी एक बड़ा, मुझे इस बारे में बड़ा इख्तलाफ है कि ये अक्सर करते हैं कि नेशनल टीम में अच्छी परफॉर्मेंस भी हो प्लेयर की, तो उसको पीएसएल की बेसिस पे ड्रॉप कर देते हैं पाकिस्तान टीम से, जो कि काफ़ी या, अनफेयर सी चीज़ है मेरे ख्याल से। लेकिन ये होती है हम्म, अक्सर, तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई थिंक ये फखर को सारी गेम नहीं खिलाएंगे। नीचे ऑलराइट। आई गेस हम शायद खेल ले कुछ गेम्स। मुझे भी लगता है इन्होंने इस बार भी जो है ना आजम को पूरी सीरीज नहीं खिलानी बेचारे को। ये ओह 5 नो। पे फिर वो न्याजी को आई थिंक रोटेट करें, शायद 1-2 मैच न्याजी खेल ले 5 पे, 1-2 आजम, और 6 पे इफ्ती, और आई थिंक शादाब इमाद को नीचे बैटिंग कराएंगे, ऑलराउंडर टाइप की जो पोजीशन होती है बेसिकली। और 3 फास्ट बॉलर होंगे, नसीम, शाहीन, आमिर। ओह माय ये मुझे गॉड। नहीं, क्योंकि नसीम, शाहीन और जमान खान होंगे मेरा ख्याल है, आमिर शायद ना खेले सारी गेम्स। नसीम और शाहीन को इधर ओके। रोटेट करते हैं और आमिर जमान खान दोनों को खिला लें, ये भी किया जा सकता है। कि मैं सुन रहा था, हालांकि मैंने जियो का देखा था कि वो कह रहे थे कि शाहीन शायद सारी गेम्स ना खेले, मैनेजमेंट ने फैसला किया कि रोटेट करेंगे इसको। शायद को फिर वर्ल्ड कप के बाद बाहर भी कर देंगे। वो बस उन्होंने या, स्टेटमेंट में लिख दिया ना कि रोटेट करना चाहते हैं, अब करना पड़ेगा। या। हाँ, करना भी पड़ेगा कुछ, कोई पता नहीं कैप्टन साहब जरा वो कैप्टनसी वापस अभी आए तो अगर अपनी मैं थोड़ी बहुत देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कप्तान को भी अंपायर बिठाएंगे। सो या, लेट्स सी कौन बाहर बैठता है, कौन नहीं बैठता। ओके, अच्छा जैद, रियलिस्टिकली सीरीज का रिजल्ट आपको क्या लग रहा है? लाइक 3-2, 2-3, वट 4-1 आई थिंक, realistically 4-1 पाकिस्तान। Pakistan 4। Oh wow, all right, and न्यूजीलैंड Zaid आप, हाँ, स्क्वाड नहीं है कोई इतना हाँ, खास। पिछले साल टू न्यूजीलैंड का टू स्क्वाड है तो इस वजह से। ओके। अच्छा, हम स्ट्रेट अवे मतलब सीरीज पे ग्रिप पकड़ लेंगे, या वी विल हैव टू रिलाई ऑन सम सॉर्ट ऑफ कमबैक? यस, ये भी हो सकता है। हाँ, 3-2 हम जीते हैं और पहले 2 गेम्स हम हारे हैं, उसके बाद अगर तीनों 3 जीते हैं सारी की तरह, ये भी किया जा सकता है। Imagine if that happened on Babar Azam return. And lastly, Zaid, आप बात कर रहे थे पार्ट टोटल की, सब पार्ट टोटल की, तो रियलिस्टिकली जो आपको मांट्रा लग रहा है हमारी बैटिंग का, या वैसे मांट्रा बेसिकली ज्यादातर बैटिंग से डिफाइन होता है, नो बॉलिंग से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर आप रियलिस्टिकली देखो, बाबर की ट्रेडिशनल अप्रोच देखो, लाइक ऑफ कोर्स ही कैन इम्प्रूव, हमें सरप्राइज कर सकता है। बट अभी तक जो आपको फील्स आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, हाउ सॉर्ट ऑफ टोटल वी वुड बी टारगेटिंग, सपोजिटली बैटिंग फर्स्ट, राइट? हाँ, मैं ये कह रहा था कि चेजिंग करते हुए फिर शायद इतना मसला ना हो, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि 1-2 गेम्स हम चैपमैन के कोई 200-250 स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स की वजह से आ जाएंगे नीचे से। नहीं, वो तो ओके हो गया, वो तो ओके हो गया, एक मैच तो हारेंगे। बट एवरेज स्कोर आपको क्या करते नजर आ रहे हैं ये बाबर आजम लेफ्ट साइड? यार, पिंडी में मुझे लग रहा है कि एक मैच 200 करके आ रहेंगे। लाहौर में शायद इतना स्कोर ना हो, 170 160 में भी। ओके, 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 ओके।
All right. So roundabout Zad का segment is done. I yes, would yes, try इतना भी के हो सकता मैं है table क्योंकि पीएसएल में आई थिंक लाहौर में हाँ काफी ज्यादा फ्लैट पिचेस थी और पिंडी में इतनी नहीं थी फ्लैट पिचेस yeah. I get your point. Okay, second segment, main segment is done. I will open the table to counter questions each other as well. Now, Imad की तरफ चलते हैं. I am still looking for few funky things, but let's see if Imad has up his sleeves. Imad ने horror painter बनना. Imad, up to you, man. Right. First of all, let's establish you guys can hear me, right? Because Karachi's internet, you guys. Okay, kya haal hai? Yeah, Right. Perfect. Right. So let's just follow Tala Bhai's butterflies, fairies, and roses with some thorns and cactuses and bats. Right. So yeah. to start off, I think the playing 11 or sort of the batting order they're going to be going with Imran Khan, like all the top order batters in the top. And I actually talked about this in the group as well. And Ahmed Bhai was really frustrated by this idea. But in this worst case scenario, this will be the batting order they're going to follow, and unfortunately, it will work out. And they're going to be taking Oh, this to the England series and then effectively to the World Cup if it works there as well. And that, okay. and again, the working out will be a very Pakistan way of working out. They're just gonna get par totals, and I think they're gonna be satisfied with that. Hmm. So yeah, so Hmm. essentially because of this horror show of a batting order, they're gonna they're gonna play Shadab at 7 and Iftihar Ahmed at 6. That means Azam Khan might not be playing this series because they will be like Azam uske alawa फिर in the PSL as well he played 3 to 4 good innings, although they were like in phenomenal. He was phenomenal in the PSL, but still they would be like इतनी चार अच्छी innings खेली थी उससे क्या होता है, and we have our combination. That means that Shadab will be batting at kakul में 7 दो as well. किलोमीटर भी नहीं भागा. Yeah, Good one. Shadab will be batting at 7 as well. Imad will I be at 8, and then our rotation, our bowlers. Now the rotation would be a very Pakistan way of rotation as well, because although they've said कि हम rotate करेंगे bowlers and everything, I think they're gonna play like let's just talk about the top two, Naseem and Shaheen. They're gonna play 4 games with them, and then they're gonna rest them in the 5th game, and then say कि हाँ देखो हमने rotate किया bowlers को. So probably that might be a scenario में. Now, around second to third T20 में, before the start in the hmm. broadcast, we're gonna hear that Naseem Shah is having some cramps and stuff, but he's fit to play. He's fit to play, and nothing's wrong. It's just a few cramps. And then after the series, we're gonna be hearing that Suhail Salim has committed another incredible masterclass with a Pakistan bowler, and he's out for 6 months. And yeah, so that's like the ultimate big gun of this scenario, and Naseem Shah will be out for 6 months. We're going to be going without him, and possibly Haris Rauf if they mismanage him in NCA as well. So yeah, so and just to sort of wind up with two fun ones, I think two of those games will be rained out, but in the worst possible way. So like they won't be rained out shuru se, the players will be coming in, going out, coming in, going out, and it's said bowlers tired होंगे and everything, and we would be on our seats for the whole day just to see two of those games ending up with no results. And I think as cricket fans, it is terrible for us to watch such games. And then the Hmm. final one is okay, Amir Sohail will be announced in the commentary panel,
and we're gonna have to bear him for 5 games. In the final stint, he's gonna be he's gonna be winding up all those games with this iconic statement, like iconic statements like, "I don't care about strike rates. I care about average." And Simon Dool is gonna probably leave the commentary box once again. So, no, actually, he didn't leave the commentary box last time, but he's gonna leave the commentary box this time. So yeah, this is the Yeah. horror show, and this is what I've painted, and it is pretty clear that in this painting, Sohail Salim is the Mona Lisa. Perfect, perfect, perfect. I loved it. I loved it, man. Uh, okay. अच्छा, फाइनली वैसे टेबल ओपन करने लगे, आप दोनों एक दूसरे पर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो. Zad had to leave early, so we gonna let him leave. एक क्वेश्चन था that is around the team camaraderie. We know Babar had issues, obvious issues. कोई conspiracy theory पे बात नहीं कर रहे. Obvious issues with both Amir, both Imad, right? Now they are back and they इमाद के तो पक्का पक्का लग रहा है कि खेलेगा. मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक हो रहा हूँ. द वे आमिर हैज बीन ब्रॉट बैक, उसका भी लग रहा है कि 2 or 3 गेम्स तो खेलेगा. So Tada, idealistically, do you see it working, and what factors? कोई कुदरत का निजाम, how it gonna work? I was intrigued to know कि अगर आप इस वे में पिक्चर फेंको. And इमाद, flip side आप ले लो कि how it gonna pan out in horror way. So Tada, starting from you. I think ideally Imad, he's become more of a middle overs bowler recently, so he can do the Nawaz role जो पहले 22 में नवाज ने किया था. I mean in Babar's T20 team. And Amir, he's, in my opinion, he's a big game player. We know about 2009, Okay. 2017. और अभी भी प्ले ऑफ वाला मैच देखें, क्वेटा ने एक ही खेला था अगेंस्ट इस्लामाबाद. They lost, but Amir was probably their best player, and he got like 1 for 20 in 4 overs. So in my opinion, he is a clutch player. Or if you go back to the title winning season 2020 में जो eliminator में super over हुआ था against Multan, he nailed 6 Yorkers in that over. He won them that super over, and they went out to win the title. So ideally, you keep playing him, and if you get the knockouts, you bank on him to deliver a great performance, and you give him the new ball. Naseem can adjust to middle overs and depth, and both Imad and Amir can play a crucial role. और इमाद का ये है कि अगर अबरार टीम में है, so he doesn't even need to bowl. You can have Shadab and Abrar in the middle overs, and he can just be a hitter down the order. All right, interesting. इमाद, टीम में मजीद रिवॉर्ड्स होते नजर आ रहे हैं आपको? Okay, so I'm gonna start with what my real opinion is, and then I'm gonna paint a horror picture as well. Now, I think we kind of tend to overrate this. We kind of tend to overrate the idea that Babar and Amir and Imad cannot work with each other and something. I think we saw in the last series with New Zealand, उसमें again New Zealand के against UTM series, उसमें Imad was there and they seem pretty fine with each other. I think Mohammad Amir probably, yeah, but I think both of them are professionals and they're just gonna take it in. And I don't think I actually don't really rate the whole idea कि बहुत लड़ाई हो जाएगी, riots हो जाएंगे and groupings like 90s हो जाएंगे. I don't think so. But in a horror picture, yeah, that thing might pan out, and we might see groupings being formed. एक side पे Imad, एक side पे Babar. Maybe the top 4 जो हमारे हैं, Shaheen, Babar, Rizwan and Shadab, they might get separated in 2 and 2. Shaheen might go to the other side. So again, that is one part of it. From the tactics scenario, I think एक horror party हो सकता है आमिर के बारे में कि
he's made to open the bowling alongside Shaheen, and then Naseem is sort of brought as a first change, I guess. So ये एक फैक्टर हो सकता है. And then इमाद का, look, the thing with Imad is that he's good with a new ball, and I think in West Indies, as Zaid's article pointed out, he should be bowling, opening the bowling, not opening bowling, but like first change power play, he should be bowling. But he's pretty fine in the middle overs too. So, and then he can be a good finisher. Even in the horror picture that I painted, he's batting at number 8. That's like he should be batting at number 7. He's batting at number 8. So I think it doesn't make that much of a difference. So with Imad, we can only just bank on the riots and grouping and all that stuff, even in the horror picture. So yeah. All right. Okay. I gonna stop questioning for a bit. Tala and Imad, if you have counter questions to each other or any talking part you wanna open in generic way, in our own opinion way for this particular series, and kind of look ahead on our World Cup. So yeah, table is fully open now. I have a question regarding the worst case picture. Sure. What are the chances कि हमारा top 5 is Babar, Saim, Rizwan, Usman, Fakhr? I generally think they're going to play one of Rizwan and Fakhr, because Fakhr is someone who didn't perform in PSL, and as Zaid laid down, I think they do tend to pick players on PSL performances. And I'm just banking on the fact that they are smart enough. Okay, Rizwan and Fakhr एक साथ ना खेलें. But I just think it will be Rizwan over Fakhr. For like, I can bet all the money for that, because I don't know. Rizwan is like part of that hierarchy of top 4, right? I'm not in a bad way, but I think it's going to be Rizwan for sure. What do you guys think? Would it be Rizwan or Fakhr? I think उस्मान को खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि स्पेशल यूएई से बुला के लाए हैं और आई थिंक इट विल बी रिजवान टू स्टार्ट. इट विल बी रिजवान टू स्टार्ट. और अगर उसका फॉर्म ऐसे ही रहता है जैसे पीएसएल में था तो you know I don't think they're going to go into the World Cup picking him just because he's a senior player. I think they'll if his form is bad then Fakhr will come in. Okay, guys. Unfortunately, Sure. okay. Imad, go ahead. I was just saying, yeah. Unfortunately, they might consider Rizwan as a big match player instead of the one they should be considering, Mohammad Haris. So don't you guys think they might apply the same thing? He's won so many matches and all that stuff, and just Finally, look at Mohammad that Haris made incredible it into average. the Just look at that. Yeah, just look. कोई 30 मिनट के बाद पहली दफा मैंने हारिस का नाम सुना है. इट इज सो सूथिंग बट सो हार्टनिंग. ओके, तला आपसे पूछना था. अगेन हम सबका ही था बाबर को लेके. हिज टैक्टिकल नाउस, have you seen any improvement in this particular edition with Peshawar Zalmi? And do you see it improving in this particular series? Yeah, we would be having same sort of questions again and again, like 5 matches की series के बाद. So how can you see the evolution of Babar as a captain? Because it is fair to point out, जहाँ पे क्रेडिट देना बनता है कि बाबर एज बेटर एवोल्यूशन हमने देखी है पीएसएल में. ठीक है, अगर कोई डिनाई करना चाहता तो ही हैज द राइट, बट फॉर मी he evolved himself as better. So specifically अगर कैप्टनसी को हम लेना चाहें, because it will gonna play important role, and it is quite possible कि हम बुरा स्टार्ट लें. मुझे लगता है कि जब हम गिर जाएं तो बाबर इज काइंड वो उठाने वाली वो उसमें नहीं है कि लाइक he gonna pump the team up. So how do you see the captain Babar playing out this series? Yeah, he's more of a soft-spoken captain instead of someone who'll be loud and telling people to stand up and get up and and fight back. I think it's too early to say if he's evolved as a captain.
Okay. Today I saw एक Twitter पे I saw a compilation of the last few overs against South Africa in that World Cup match. और उससे मुझे याद आया that just in that scenario he just let the bowlers do basically whatever they wanted. Bowlers ही अपनी Hmm. lines ball कर रहे थे, field भी इतनी मतलब tight नहीं थी. He wasn't that proactive. Or PSL में he did make some good moves. As Islamabad fans, I'm sure we remember Arif Yaqub's 19th over. So he did make some clever moves, but then again in the eliminator against Islamabad, उसमें भी at the end थोड़ी Amir Jamal and Luke Wood की rotation इतनी ideal भी नहीं थी. Hmm. And that was after Heather and Imad started attacking. तो वही point है कि जब under pressure team आ जाए, he can, revert to the plans on paper. So uh, I guess we will see. It's too early to say if he's evolved or he's gonna captain the same way. लेकिन इस Okay. series में काफी I think um, it's an important series to judge his captaincy because it's a low stakes series. और Yeah. इसमें नज़र आता है if you Yes. have that long term vision to win the World Cup or if you're focusing on the next game only. Hmm. ओके इमाद इसी पॉइंट पे आपकी क्या थॉट्स हैं एंड बिगर पिक्चर लिंक कर लेते हैं दैट इज अरम का क्वेश्चन शायद आपको याद हो ग्रुप में उन्होंने फेंका था कि बिकॉज बाबर हैज बीन रीअपॉइंटेड सो हाउ मच पावर ही वुड हैव गिवन या हाउ मच पावर ही वुड हैव टेकन बैक सो या स्टार्ट विद के कैप्टेंसी आपको कैसी लाइक फील्स क्या आ रही हैं ऑफ कोर्स वी कांट प्रेडिक्ट इट ऑल but how do you see his probable evolution as captain and link it with the bigger picture? Yeah, so I actually read this article. I don't know if I'm allowed to name क्योंकि लिखा किसने था. And they actually compared Babar's captaincy like 6-4-6 वाला जो उसका specific style था पहले with math skills, with math questions. So that actually pretty much laid down कि like how our captaincy was pretty much going Pakistan के लिए pre-World Cup. And then we saw okay, he made Osama Mir bowl against Afghanistan even when the ball was reversing from both Hmm. ends. So, but in this edition, we saw that Peshawar Zalmi in the field made some great decision. Now, focus on the fact that I've mentioned Peshawar Zalmi, not Babar Azam, because I'm still not sure if those were his decisions because it Yeah. was pretty much laid down in the commentary, and I actually mentioned this पहले भी कि Roman Powell, नहीं, Roman Powell was De facto. making a lot of decisions in the field, and Darren Sammy was very much engaged as well. So like यही लग रहा था कि Darren Sammy call आ रही है, Roman Powell is taking the decision or communicating it to Baba. And Powell was also making changes in the field. So I don't know if it was Babar or Powell whatnot. So again, it's this series इसमें हमें देखना होगा कि if he has actually improved on his captaincy, because again, as Yeah. Tarabai mentioned, low stakes series hai, and uh, Hmm. and the fact that if he doesn't really change himself, doesn't experiment Hmm. even in such a useless series जहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा Yeah. मौका है, even if you lose, it doesn't matter. So then it would absolutely lay down that he has not changed at all, and yeah, and even and like PCB's decision of bringing him back sort of solidifies uh, the notion that it was a mistake to remove him. So maybe he might just come with some more confidence कि मैं सही था पहले. Hmm. In terms of Yeah. his Great. power, the power Hmm. that he'll have, again, अगर उसे लाए हैं वापस, so theoretically they should be giving him a lot of power. But the, the thing is that in the PCB system right now, there's so many people sitting right now who are so power hungry and they want to take credit for everything, and they want to exert their power as well for no reason, like they punish players for no reason. So I don't know if he like loses a game or two, they might just take that power back and start making the decisions by Hmm. themselves. Now, just a final point. I'm sorry, मैं थोड़ा लंबा कर दिया इसे.
नहीं, Uh, it is fine, it is fine. people like Craig Critic, again someone who I really respect because he's Craig Critic. He's Craig Critic. They think कि कैप्टनसी इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करती T20 में, and it doesn't matter if it's Shaheen, if it's Babar, if it's Rizwan, if it's Shadab. uh, and if we go from for his school of thought, so maybe it doesn't matter कौन captain. So yeah, this is what my thought is. Yeah, and if I can add something about the captaincy in T20 point, Yeah, you know, I criticize Shadab a lot क्योंकि during the PSL because he's the one on the field. तो एंड में Yeah. यू डोंट नो कि इफ इट्स टैक्टिक्स अगर सिर्फ उसने ही ऑन फील्ड ही डिसाइड किए हैं चेंजेस या रेहान भाई ने या कीरन फ्रॉम क्रिकविज वाज द एनालिस्ट और whoever. But at the end, if you have like a competent think tank, I guess it's correct that captaincy इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि वो डिसीजन ही एक्सिक्यूट करने होते हैं फील्ड पे. लेकिन अगर पाकिस्तान की तरह यू हैव सकलैन मुश्ताक एज हेड कोच, then it matters who's captain and who's making the tactics. Yeah. So इस पे भी depend करता है कि Gary Kirsten what kind of coach he will be and how much will he rely on making data-based plans and executing them through the even captain. even right now, Azhar Mahmood is, I think, he's a very capable coach, and he's done well for the franchise teams as well Yeah, as yeah. with when he was with Pakistan under Mickey Arthur. So I think yeah, capable think tank हो तो captaincy at the end of the day अगर थोड़ी सी wavered हो भी जाए तो it sort of cancels out. And I think Yeah, Gary Christian, we all know his credentials. So if he's the one who's coming in, I think we are in for a good ride. yeah. Okay, guys, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं. Let's switch towards our like we will debate kinda. शायद हमने WhatsApp में ये चीज पहले डिस्कस किया तो it might help out. What in our opinion should be the playing exercise starting from the word scratch. Of course, batting order flexible है and our whole approach is कि यार we kind of play two teams जिन्हें like 3 और 2 के मैचेस में हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. ये मेरा अपना मानना है. ऑफ कोर्स 1-4 की रेशियो भी गिवन की जा सकती है. 3-2 सम प्लेयर्स को 5 मैचेस की रन भी दी जा सकती है. इमाद मुझे रिवाइंड कराना एक सवाल मेरा इफ्तिखार के ऊपर है. प्लीज रोट इट डाउन. बस मुझे याद करवा देना कि इफ्तिखार के ऊपर डिस्कशन करिए. So anyway, what should be our probable 11 starting from openers? मेरे ख्याल कोई हम में कोई डिफरेंस नहीं है that it should be Rizwan. Oh, sorry, Rizwan क्यों बोल रहा हूँ? Babar and Saim, right? No differences, okay? वो बाबर आ गया तो अब मुझे लग रहा है कि क्या पता रिजवान बाबर को नहीं कर. So yeah, that was whole point. तला इमाद अपना माइक ओपन रखो. So इस पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, right? हाँ, has to be Babar and Saim. I think Yeah, otherwise. okay. Okay, 3 पे शायद कुछ डिफरेंस बने. माई चॉइस थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है लेकिन माई अगेन जो स्क्वाड बनाया गया उसमें से हमने पिक करने तो उस्मान खान इज माई चॉइस फॉर नंबर 3. इमाद आपकी चॉइस क्या है? Yeah, it is Usman Khan, and अगर आप उसे लाए हैं, you think you believe in him, and he's a very capable player. You have to play him. Best batter of the PSL, so um, you have to like और back him. और ना सिर्फ इस सीजन के पिछले सीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस की है. ये नहीं कि एक साल की बेस पे. तो जा अगेन पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो ही इज वेरी मच क्या कहते हैं By the way, एक्लेमेटाइज्ड विद. हाँ. just side note, Quetta released both Saim Ayub and Usman Khan. Quite a gladiator. I mean, they are just. उन पे पूरे रिसर्च बनते हैं. ओके, नंबर 4 इज शदाब खान. इस पे भी कोई डिबेट नहीं. मैं आगे मूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, राइट. नंबर 5 इज आजम खान फॉर 5 मैचेस, राइट. ओके. नंबर 6 इज इफ्तिखार. हाँ, has to ओके. be. किसी का कोई आर्गुमेंट आ जाए तो जो फील फ्री टू कट मी आउट. नंबर 7 इज इमाद वसीम इन माय लाइनअप, राइट. आपकी भी लाइनअप यही बन गया, राइट. ओके.
Now, Naseem Shah and Shaheen Shah sure shot, right? But इनके against मैंने लिखा हुआ है 3 मैचेस लिखे हुए मैंने. Of course we can get like एक मैच खिलाओ, एक मैच ड्रॉप करके, या 3 पहले खिला दो. So yeah, kind of 3 मैचेस दोनों के लिए. आज जो एग्री के 3 मैचेस बनते हैं दोनों के. आई थिंक एक मैच बनता है दोनों का. Oh, okay. That is interesting one. That is interesting one. इमाद, आपके क्या थॉट्स हैं नसीम शाह और शाहीन को लेके इन पर्टिकुलर? इमाद, कैन यू हियर अस? इमाद, His camera isn't moving for me. हाँ, तो थोड़ा सा लैग हो रहा है. Okay, hopefully he will join us back. So, Talha, correct me where we 9 players हो चुके हैं, right? हाँ. Shaheen और नसीम हो चुके हैं. हाँ, तो 2 players बचे हैं. अबरार इज श्योर शॉट फॉर मी. एनीवन हैज एनी? तला, आपकी लाइनअप में श्योर शॉट है कि नहीं? हाँ, definitely has to play. ओके. इमाद, मुझे बता देना व्हेन यू आर बैक विद अस, जस्ट टू टाइम. Yeah, I am back. I'm back. हाँ, ओके. तो वी थोड़ा सा एक डिफरेंस आया था कि आई वुड प्ले नसीम एंड शाहीन बोथ 3 मैचेस. ऑफ कोर्स श्योर शॉट तो है लाइनअप में, वो तो कोई डिबेट का पॉइंट नहीं. सो व्हाट वुड बी योर मैच रेशो, लाइक 1-4 जैसे तला ने बताया, या 3-2 जैसे मैंने बताया? So, I think just to sort of establish कि मेरा क्या ओपिनियन है, अगर ऑस्ट्रेलिया खेल रही होती न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तरह की साइड से, तो मिचेल स्टार्क, हेजलवुड एंड पैट कमिंस would at max play one game. Okay. I don't think we should be wasting these bowlers इनको इतना ज़्यादा खिला के. So ज़्यादा 2 please, इससे ज़्यादा नहीं. यार मुझे ये बताओ, एक मैच खिला के व्हाट वी आर गना गेन, राइट? या तो फिर स्क्वाड में कंप्लीट think- रेस्ट अवे. एक मैच खिला के, you can rest the pacers that have played 4 matches. You can rest Amir and Zaman and whoever. Yeah. इसलिए एक हाँ. मैच में कह रहा हूँ, वरना I would say 0. क्योंकि उनको भी हाँ, रेस्ट yeah, करना है. हाँ, honestly, Yeah. they won't be in my squad वैसे देखा जाए तो, in my preferable squad. हाँ, मेरा वही पॉइंट है कि अगर डाल दिया तो थोड़े से लाइक अगेन थोड़े से मैं रफ पिच फेंकने लगूँ. मैं थोड़ी सी पहले भी फेंकी थी. दो लाइनअप्स आप रफ वे में बना सकते हो. आई नो 17 प्लेयर्स है, बट कुछ प्लेयर्स को कांस्टेंट रखते हुए, लाइक साफ इफ्तिखार एंड आजम फॉर मी, उनको कांस्टेंट रखते हुए आप, और इवन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर जो मेरे लिए कांस्टेंट रहेंगे. These are Saim Ayub, Iftikhar, and what I said, Azam Khan for me. तो बाकी प्लेयर्स को आप स्विच अराउंड कर सकते हैं. बट व्हाट आई कैन सी कि यार एक mantra आप सेट करो कि यार जो भी लाइनअप हमारी खेल रही है, दैट इज हाउ वी कैन प्ले. चाहे चेस कर रहे हो या बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, व्हाट वुड बी देयर रोल्स. तो जो भी आप 2 सेट ऑफ लाइनअप बनाओ, उनको 3 या 2 मैचेस अकॉर्डिंगली दो, सो दैट दे कैन जेल एंड सिंक्रोनाइज विद मैच सिनेरियोज एज वेल. दैट इज माय होल पॉइंट. एक मैच खिला के आप लाइक व्हाट आर वी कैन हैव, लाइक या तो खिलाओ नहीं, मुझे मेरा और फाइनल पॉइंट है, या खिलाओ नहीं टोटली, विच आई वुड बी कम्प्लीटली फाइन विद इट. ठीक है, डाल दिया तो कुछ लाइक सिमेट्री बनाना शुरू कर दो. वो क्या कहते हैं, टीम केमिस्ट्री बनाना शुरू कर दो, बिकॉज बहुत ही फेसेस आए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. सो दैट इज माई होल पॉइंट. अबरार का पॉइंट था. इमाद, आपकी लाइन अपने श्योर शॉट है या नहीं? बिकॉज तला एंड माई सेल्फ हैव गॉट अबरार. I think that the lineup that's been working for them काफी अरसे से, it includes 4 fast bowlers and 2 spin bowling all-rounders. So according to that, maybe Abrar doesn't get in, but अगर, and even Pakistan में भी we might get such conditions in Lahore शायद, तो maybe should play them there. But in England, I don't think so. In West Indies, maybe yeah, Abrar should be getting in. But I think their first choice would be Osama Mir. I don't agree with that, but their first choice would be Osama Mir. I can see it happening as well. I can see it as happening. तला, आपका लास्ट पेसर बचे है नबे. तो who is your 11th player?
Ideally Haris Rauf, but he's injured, so Hmm. I think Amir or Zaman, either is fine, really. Either is fine. Imad, for you? Yes, my answer is the same, just as Afraz said. Uh, uh, it could be either Zaman, it could be Amir. Death bowling जो है वो दोनों ही सही करते हैं, and I think both can be good first change bowlers, I guess. Yeah. Uh, Maybe okay. I'm actually I have a question for you guys. Who's actually better एक मिडिल में आके एक ओवर करा के एक स्ट्राइक ओवर कराने के लिए who's better, Zaman या आमिर? मिडिल में like 10th over, 12th over, something like that. यार सीजन अच्छा नहीं गया, बट माई स्टिल मेरी चॉइस मिडिल ओवर में जो आपने बोली, दैट इज जमान खान. Same for me. या आमिर डेथ ओवर में अच्छा एक्स फैक्टर Right. प्रोवाइड करता. जमान डज इक्वली गुड एज वेल, बट होपफुली जमान खान मेक्स अ गुड कमबैक. मिडिल ओवर में जमान खान की वेरिएशन, और इवन अगर उसे यार्कर वाला रोल भी दिया जाए तो ही कैन डू अ जॉब. तो ओके, प्रेडिक्शंस कर रहे थे, फिर इफ्तार वाला पॉइंट लास्ट डिस्कस करेंगे. प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ मोस्ट रन्स, starting with you, Imad, any rough name from Pakistan or New Zealand जो like overall top लग रहे हैं, या two names ले सकते हो, but I would, क्योंकि एक नाम लेना पड़ता है because it is of course a prediction. तो या Yeah, I think it's going to be Babar. ओके, पहला उस्मान खान क्यों लग रहे हैं कि टॉप स्कोर हो जाएंगे इधर भी लाइक. I think Babar. He'll be ओके the best batter of the series this time, I think. ओके, मेरा लाइक टॉप रन गेटर मैंने डाला हुआ है. बैटर कोई भी हो सकता है, टॉप बैटर, इम्पैक्ट फैक्टर काउंटर हो सकता है. अगेन टॉप, अगर क्योंकि मेरे जो प्रेडिक्शन टॉप रन गेटर के लिए वो साइम अयूब है, सो ऑफ कोर्स ही विल हैव लार्जर इम्पैक्ट एज वेल. So yeah, that is my choice. But of course, Babar is a sure shot and kind of obvious choice. Top wicket taker तला आपसे start करते हैं. I think top wicket taker will be Mohammad Amir. Oh wow, that is a bold choice. Imad, आपकी आपकी क्या choice है? अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो पे जा रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी, because worst case scenario में he's playing all the games, या 4 games. But वैसे in the realistic scenario, according to what we're hearing, I think I would go with Mohammad Amir as well, because yeah, बाकी सब rotate हो रहे होंगे. I think Amir is going to be the one who's going to play 5 games. I think Usama Mir भी हो सकता है वैसे, but Amir could edge out. Yeah. आमिर मुझे लग रहा है कि मैचेस तो खेल जाएगा, विकेट शायद इतने ना ले सके. Why I am kind of inclined towards Shadab Khan. I want him. मुझे लग रहा है कि ज्यादा मैचेस खेलेगा, सो आई एम गोइंग विद शदाब. बट टू टफ चॉइस टू पिक आउट, क्योंकि हमारी लाइनअप भी चेंज होगी और उनकी तो ऑफ कोर्स न्यू प्लेयर्स हैं, बट दे हैव गॉट रियली गुड लाइनअप. पिटी दैट वी आर नॉट throwing their perspective, but anyway, we will try के जो रिव्यू करें उसमें हम कर सके. फाइनली गाइस, रिजल्ट प्रेडिक्शन मैच और लाइक सीरीज रिजल्ट. इमाद आप स्टार्ट ले लो. I think 4-1 is a very realistic prediction, as Zaid Bhai said. I think we're gonna win all the games. बहुत आसानी से. You said कि New Zealand side is really good, but I mean, to be fair, it's not as good as us. हाँ हाँ, Maybe वो and of course probably C एक team. game we see that the Chapman and last time. I know C team भेजे, but Chapman and last time they उससे are जिताया था, probably एक game में से. they are good raw players. raw का वर्ड यूज करें, ऑफ कोर्स हमारी टीम में जो एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड ऑल है, बट ये नहीं कि उन्होंने रेलोकेटेड भेज दिया. लाइक आई एम यूजिंग दैट फेमस वर्ड. It can still give a good fight in few matches. I think Okay. we'll win 5-0. King Babar will Oh, dominate.
ओ here we go. चला क्लाउड 9 पे लेके जा रहा है. ओके व्हाट आई एम वैसे सीइंग के हाँ हाँ even from a realistic sense, आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान में, so मतलब पिंडी में मैचेस भी होने तो या इट माइट प्ले अ पार्ट. जो मुझे लग रहा है कि यार मैंने बारिश वाला फैक्टर काउंट इन किया हुआ है. पहला मैच हम जीतेंगे, दूसरा वो जीतेंगे, देन वी गना विन द मैचेस अगर बाकी सारे हुए. तो माय प्रेडिक्शन इज के हम एक मैच लाजमी हारेंगे. एक मैच मैंने बारिश पे छोड़ा हुआ है. 3 मैच हम श्योर शॉट जीतेंगे, एक मैच हम श्योर शॉट हारेंगे. तो अगर बारिश होगी तो वो वाला मैच हम जीतेंगे. So 3-1 or 4-1 for me. Lastly, viewers, of course, do drop your feedback about the horror picture painted by Zad, Imad, and Salah, and of course your predictions for the series itself. Lastly, guys, let's try कि हम quickly शायद आगे भी शायद ये point रहे. That is around Iftikhar Ahmed. Okay, our different product in PSL. His performances haven't been translated for one reasons or two on international scale. ठीक है. अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी बुरी गई थी. ओके, जो हमने अवे सीरीज खेली. नाउ काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो में लेके जा रहा हूँ. व्हाट इफ ही फेल्स बैडली? आपको विद इन द स्क्वाड ही कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, या वी माइट गो टू हैदर, हारिस, समथिंग लाइक दैट, या फकर को फिर हम इसमें वापस जाएंगे? व्हाट इज रियलिस्टिक सोल्यूशन अगर लाइक इफ द फेल होता है? ऑफ कोर्स वी ऑल वांट कि वो परफॉर्म करे, 5 मैचेस की रन भी मिले, बट वी नो कि 3 मैचेस में फेल हुआ तो ही माइट बी रोटेटेड. So how do you see the role of Ifti and how should he perform there? Anyone of you, table open. आई थिंक 5 मैचेस में फेल भी हो तो ये भी देखना कि बैकअप ऑप्शंस कौन है. यू नो हिज रोल इसके पहली बॉल से आके उसने हिटिंग करनी है. Yeah. हैदर अली को देखें तो यू नो द मैच दैट ही स्कोर्ड रन्स इन, या कोई भी मैच जिसमें उसने कंट्रीब्यूशन भी किया, 20 रन भी बनाए हैं, उसमें ही केम इन लाइक अगेंस्ट पेशावर, ही केम इन आफ्टर 10 ओवर्स. मतलब उसके पास कुछ टाइम था टू सेटल इन फॉर अ फ्यू बॉल्स. So you have to look at the options you have of hitters who can, you know, hit sixes from ball one. I think मुल्तान ने उसको perfectly use किया था. Even in the final, Usama Mir को भी over which they sent him at 8 and paid off क्योंकि you know he made a lot of runs against pace at the death overs, in the death overs. तो 5 मैच वो fail भी करता है तो I think you have to still back him for the next series in my opinion, क्योंकि और कोई option नहीं है. You know you can't bring back आसिफ अली at this point. Yeah. हाँ. मुझे सबसे बड़ी वरी मेरे पूछो ना. ओके, बॉलर्स की शायद इंजरी हो जाए, बट एट दैट पॉइंट आई हैव काइंड ऑफ मेड पीस कि यार एक बॉलर आएगा तो दूसरा चला जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज विद पीसीबी मेडिकल डिपार्टमेंट, या जैसे हम वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं. मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में अगर हमारा लूप होल आया तो दैट इज अराउंड इफ्ती. दैट इज सच अ क्रूशल पोजीशन. आई रियली होप ही परफॉर्म्स. और अगेन मेरी नोशन भी वही है तला वाली के अगर अगली अगली सीरीज हमारी इंग्लैंड के साथ है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें भी नहीं Four, परफॉर्म करता. I think हाँ, 4 उसमें भी नहीं matches परफॉर्म. against England. हाँ. सो माई अप्रोच इज के वर्ल्ड कप तक इसे पूरी रन दो, देन वी विल सी कि उसका फ्यूचर कैसे होल्ड करता है. बट इमाद, आर यू एप्रीहेंसिव अबाउट दैट पोजीशन एंड डू यू हैव एनी आइडिया के व्हाट दे माइट डू या व्हाट दे शुड डू इन केस ड्रास्टिकली फेल होता है? Yeah, I would also persist with him. The thing is that he's such a capable batter. He's shown that if he's used in the right way, isn't exposed against spin. You need to you need to persist with him, and I would urge Pakistan cricket team to send in Imad and Shaheen over him अगर इस तरह की situation है कि early wickets fall हो गई हैं, like he has to like we've got 4 out हो गए हैं और spin अभी भी चल रही है. You need to send these players up over him. Uh, yeah, so this is what my idea is. Even अगर वो इसमें भी fail हो जाते हैं, and again ideally I would still persist with him, but
I don't think Pakistan cricket team would, because they would be like, we gave him the Hmm. best environment to work in, and he wasn't the docile working class he should have been, and so I think they might go towards a Khan Niazi, who won't be as good of an option as much as I love him. Hmm. ओके ओके ये मेरा वर्ल्ड कप तक बहुत बड़ी वरी रहेगी बाकी आई प्लेयर से थिंक मुझे अगर काइंड ऑफ बाहर फेल होता है तो रिप्लेसमेंट उसकी शदाब होगी एज अ हिटर. आई थिंक दे माइट यूज शदाब इन दैट रोल. तो रिसेंटली एक you talked about critic before. He had an article on Grassroots about picking Haris Rauf and Mohammad Haris, जो I don't think it will happen. लेकिन उसमें एक वो stats भी उसने डाले थे about पाकिस्तानी बैटर्स रिकॉर्ड इज हाई पेस, मतलब 140 प्लस. उसमें शदाब का के स्टैट्स देखे, एवरेज इज लाइक 65 विद स्ट्राइक रेट 150. सो ही कैन प्ले दैट रोल आई थिंक इफ नीडेड. लेकिन उसके स्पिन के नंबर्स भी इस तरह के हैं दैट यू नीड टू यूज हिम इन द टॉप 5 इन माय ओपिनियन. या सपिन के खिलाफ और कोई इतना अच्छा खेलता भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो या आई नो आजम खान कैन प्ले, बट वो क्योंकि 8 ओवर्स कंसेक्टिवली काइंड आ जाते हैं, तो शदाब हैज टू बी देयर. Okay, that would be my only biggest enigma, my fear throughout the World Cup, till the World Cup. But I really hope if he does provide some magic. We are done. Lastly, in rating पे शायद मैं अपनी justification group में फेंकूं because we are running out of time. Wonderful discussion. First of all, मैं अपने parting thoughts पहले put कर देता हूँ. Thank you so much तला यार. Wonderful ideas, wonderful facts, smart and incisive. Rating की justification मैं अलग दूंगा, but how did you present it? I am going that way. Rating for yourself, because मैं overall ratings देख रहा हूँ, कुछ justification बाद में फेंकूंगा. That is 7 out of 10. Zad was 7.5 or 7.75, but below 8. Imad nailed it for me. Even Tala would agree. 9.5 out of 10. Justification बाद में दूंगा. Thank you so much, Imad, for taking time out, first of all, being involved in the show, taking such extensive time in which you are busy study. Thank you so much, Tala. Thank you so much, Zaid earlier, for joining. Thank you so much, viewers. And lastly, best of luck to Pakistan men's cricket team. And please don't forget, at the same time, Pakistan women's cricket team भी same days में या different days में different timings में खेल जाएंगी. Please watch them. If you can go to matches, please go support them, because that is our national team. That is our national team, and they would be playing for me far more important series than our men's team. So please support them. Please, whatever way, just देखना चाहते हैं, whether you can tweet, whether you can go to stadium, please support them. So yeah, good luck Pakistan men's team, good luck Pakistan women's team, and good luck Pakistan sports, good luck Pakistan in general. Viewers, thank you so much for tuning in. Jitran Samath and Allah Hafiz.